Okay, particularly the students of GS College of Commerce, Varda, I have already sent a bunch of numerical problem to you on your group regarding cost sheet. When you observe the bunch of that numericals, according to the numerical problems, I have given the solution also. But to better understanding how the cost sheet is prepared, with the example, I will try to explain you through the video lectures how cost sheet is prepared on the basis of numerical problems given. जो cost sheet बनाने का जो numerical problems है, वो आपके ग्रुप पर दिया हुआ है. So as far as concerned the question number 1, now look here, I will try to get the solution. Question number 1 में दिया हुआ है, the company has produced 200 bicycles and following are the details regarding cost sheet. Luckily, the numerical problems are arranged in a systematic way. So when you go one by one, automatically step by step, the component of cost sheet will you observe. For example, now let's start. When you go through the problem, the first item is the opening stock of raw material. Look here, the opening stock of raw material rupees 25,000. It's in the problem. There will be the plus purchases of raw material 90,000. You go through the problem. Opening and closing may be a joint, but when we use the opening stock of raw material, immediately there will be no closing stock. There is a equations. So the opening stock of raw material plus purchase of raw material 90,000 plus carriage on purchase. Two types of carriage will be available in the numerical problem. One is for purchase, other is for sale. The purchase carriage is a part of material consumed, whereas the carriage outward is a part of selling and distribution overhead. Hence, carriage on purchase is plus here. Total 1,30,000. This is technically the material available for production. We deduct the closing stock of raw material rupees 30,000. Hence, the entire material consumed for producing 2,000 bicycle is rupees 1 lakh. Understood? This is the equation. Plus, now you go through the problems. There is a wages. Wages is equal to the direct wages 30,000. When we add in the material consumed, the next amount will be 1,30,000. This is the prime cost. Both are the direct expenses. Now we turn towards indirect expenses. Now it will be divided in 3 categories: factory overhead, office overhead, selling distribution overhead. These are the sequence. We cannot change the sequence. And the first would be factory overhead. When you go through the problem, the number of items is there. We have to choose, select, bifurcate which expenses are related with factory. So when you go one by one, so there is a wages of foreman. It is a simple wages. But here is the wages of foreman. Foreman means the particular persons who doing the work on some machine. We can say the machine operators as far as concerned the factory overhead. जब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है तो मशीनों की देखभाल के लिए एक तरह से सुपरवाइजर या उसका आप उसको आर्किटेक्चर बोल लो या उसका मैकेनिक बोल लो, ये उसकी वजह से फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री का एक्सपेंडिचर आएगा. इलेक्ट्रिक दो प्रकार का दिया है, फैक्ट्री और लाइट ऑफिस. फैक्ट्री की लाइटिंग फैक्ट्री में आएगी 500 रुपीज. देन फैक्ट्री लाइटिंग के साथ इलेक्ट्रिक पावर 500. Factory lighting 1,500. You go through the problem. There is a problem in the descriptions box also. You have already the numerical problems. So the storekeeper wages, because the storekeeper wages means the storekeeper who is the person who maintain the control of store. So it's related with factory. Rupees 1,000. Then oil and water is utilized in the factory process 500. Factory rent rupees 5,000. Then repairs of plant 3,500. Then depreciation on factory plant 500 rupees. And consumable stores of rupees 2,500. You must understand the consumable stores means in हिंदी जिसमें हम बोलते हैं कि फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारा कचरा, ऑयल, वेस्टेज जब गिरता है तो उसको साफ सफाई करने के लिए या मशीनों को पोंछने के लिए कपड़े के टुकड़े हो गए, कपास हो गए,
ऑयलिंग का सामान हो गया, ग्रीसिंग्स हो गया, these are the consumable material which is essential to run the factory machines, and that's why it is comes under the category of factory overhead. So all these are the expenditure which is related with factory overhead. Total factory overhead is 70,500. Now it will be added in a prime cost of rupees 1,30,000. Therefore, the new total will be 1,47,500. This is the factory cost. Okay? Understood? So the material is over, wages is over, factory overhead is over. Now we come to second indirect expenses. Now look here, this is office overhead. Office overhead means the expenditure which is associated or related or in the nature of office. According to the numerical problem, there is a lighting. इसके पहले मैंने आपको बताया था दो प्रकार की लाइटिंग दी थी, एक फैक्ट्री की है, ऑफिस की. ये देखिए, फैक्ट्री की लाइटिंग फैक्ट्री में गई, ऑफिस की लाइटिंग आई 500 रुपीज. फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री में गया, ऑफिस रेंट ऑफिस ओवरहेड में आया 2500. रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री फैक्ट्री में गई, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस ऑफिस में आया 500. नाउ द मैनेजर सैलरी. द मैनेजर सैलरी मींस इट इज, सपोज हियर इज द वर्ड फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, देन इट विल बी comes into factory overhead. Here is a simple manager or a general manager or a simple salary. It is a part of office. Then depreciation of office premises. When the factory premises depreciation, it is a part of factory. But here is the office premises depreciation, office expenditure. Director fees, office expenditure. Office stationery, office expenditure. Telephone charges, office expenditure. Postage, office expenditure. And meanwhile, if you observe strictly, there is a one item transfer to reserve of rupees something, whatsoever it may be. But the transfer to reserve is not a part of costing because it will not affect the cost of production. Therefore, जो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है क्योंकि वो लागत को अफेक्ट नहीं करता. बुक एंट्री बोला जाता है और आफ्टर प्रॉफिट वो ट्रांसफर एंट्री है जो कि आपके प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए की जाती है. और यदि आपको फाइनेंशियल अकाउंट अच्छे से आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरली पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स की कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट शीट में आती नहीं. ये टोटल होगी इसकी 7,375. दैट विल ऐड इन फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट में जुड़ेगी तब नई कॉस्ट बन गई आपकी ऑफिस कॉस्ट. इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है. नाउ मैंने पहले कहा था मटेरियल वेजेस डायरेक्ट है, 3 प्रकार के इनडायरेक्ट है. फैक्ट्री खत्म हो गई, office expenses is over. Now we come to selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead means the expenditure which is required to promote the sale or which is related to sales. आपको अपनी वस्तु बनके तैयार है. आज के ज़माने में आपका प्रोडक्शन हाथों हाथ जनरली बिकता है नहीं है. आपको कुछ न कुछ पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट या प्रोपोगंडा एनीथिंग करना पड़ेगा. इसलिए ये देखिए सेल्समैन आपने पॉइंट किया, उसके सैलरी टू इंक्रीज द सेल देयरफॉर कम्स इन दिस ओवरहेड. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आल्सो पेड टू द सेल्समैन. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू प्रमोट द सेल. वेयरहाउस एक्सपेंडिचर टू कीप द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन नीट एंड क्लीन रेडी. वस्तु बनकर तैयार है तो तुरंत नहीं बिकेगी, कुछ दिन तक आपको अपने वेयर हाउस में उसको रखना पड़ेगा. और यदि वो कुछ खराब होने लायक वस्तु है जिसको वातावरण से असर पड़ सकता है तो उसको सेफ रूप में आपको रखना होगा. तो ये भी, और अदरवाइज आपकी वस्तु बिकेगी नहीं, खराब हो जाएगी, लेगा नहीं, डैमेज माल कौन लेगा आपका. तो आपको वेयर हाउस में रेडी गुड्स को सेल करने के पहले ओरिजिनल अवस्था में बढ़िया क्वालिटी की तैयार माल अच्छा फ्रेश दिखे, इसीलिए वेयर हाउस है, सेल से रिलेटेड है and carry out. Okay. Further, there will be to another item, the income tax paid and dividends. Again, income tax paid and dividend
is not the items of cost of production because it is treated after net profit drawn by the profit and loss account. तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एक तो सीधे सीधे शब्दों में वर्ड याद रखिए, ऐसे ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के अंदर में रिफ्लेक्टेड होते हैं उसका टेक्निकली कॉस्ट शीट से लेना देना नहीं। जो ट्रेडिंग अकाउंट्स की आइटम्स है मैक्सिमम आपको फैक्ट्री ओवरहेड में दी जाएगी और जो पीएल अकाउंट्स की आइटम्स है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की वो सेलिंग और ऑफिस में डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए सेलिंग का ओवरहेड्स 8375 आया। Now it will be added in 1,54,875. So final total is 1,63,250. Dear student, this is the total cost. Now it's up to us how many profit we want. In the numerical problem, I think so. There is a sales amount will be given. Yes, there is a sales amounts are available rupees 2 lakhs. Now look here, the profit is automatically find out. We have prepared the goods on total cost of rupees 163,250. These goods are being sold in rupees 2 lakh. So how much amount we charge more? Generally 750, 636. Yes, it is correct. 510-230-3460-6730-102. Therefore, the difference between total cost and sale is equal to net profit. आप 2 लाख में से इसको माइनस कर दो तो आपको बीच का डिफरेंस दिखाई देगा. This is the profit. Technically, cost sheet का पर्पस होता है to find out the total cost. So when we compute the total cost, technically meaning of cost sheet is over. But whenever the sales is available, so we should draw the profit or loss because it will be affect whenever the tender price will quote in the numerical problem. गणित के अंदर में कॉस्ट शीट के साथ टेंडर प्राइस बनाने की बोला जाता है. जब बनाना बोलेगा तो हो सकता है आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट की हिस्ट्री को देखकर नया बनाना पड़ेगा. तो ये सिंपल कॉस्ट शीट थी जिसमें पूरी अमाउंट दी हुई है. And this is the solution of our first lot of question number 1. Thank you.